Hello my friends and students, welcome to my channel, and it's a video here. I always get the topics for making a video from my students because they ask me questions about English and I make videos on that. So it's a video here about a word, what. But not as an interrogative word. What? Jo. So we are going to make some of the sentences using what. Like, if suppose I say a sentence, you may do what you like. What does it mean? You may do what you like. आप वो कर सकते हो जो आप चाहो. I am not concerned with it. You may do. आप जो चाहो करो. मुझे means it is not there कि मुझे मतलब नहीं है. But the meaning of that sentence is I am not concerned with it. You may do what you like. मतलब आप जो करना करो, मुझे क्या लेना देना. You may do what you like. अब इसमें ये तो हो गया जो, लेकिन कई बार जो भी अगर सेंटेंस में आ जाए, ये तो हो गया जो भी, तो क्या करेंगे अब. You may do, ये तो हो गया you may do what you like. अब जो भी आप चाहो वो करो आप. जो भी आप चाहो, जो आप चाहो, जो भी, तो you may do whatever you like. तो ऐसे भी इसको बोला जा सकता है whatever. लेकिन whatever का और भी हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में. अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. जैसे मैं कहूँ I want to be a part of it. Whatever it is. अब देखिए यहाँ पे मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, ये जो कुछ भी हो. I want to be a part of it, whatever it is. ये कुछ भी हो, मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ. अभी एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे. जैसे मैंने कहा we are here for him. तो हम उसके लिए हैं यहाँ पे. Whatever his decision is or may be. ठीक है. Whatever his decision is. ठीक है. तो ये क्या हुआ सेंटेंस, देख लीजिए. We are here for him whatever his decision is. तो हम यहाँ पे उसके लिए, चाहे कोई भी, जो भी डिसीजन हो. तो जैसे, तो इस तरीके से आप whatever का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. आप चाहें तो कमेंट्स में लिखिए यहाँ पे. I'll check it and I'll let you know whether it is right or wrong. But it is a simple use. You can do it. And please like this video and share it for others. And you may contact me if you want to have one-to-one classes with me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video in below that. So thanks for watching. Thank you.